Okay. So in last class, we have understand what is the data and what is the type of data, and then what is the advantage and disadvantage of the primary and secondary data. So here we have understand how can we present the data. The presentation of data is very important. So here, how can we present the data? So we have a 1 minute. So presentation of data. So we can present the data in table form. Whatever data we have, we can present in table form, maybe graph, maybe charts. So that logical and statistical conclusion can be derived from the collected measurements. When we present the data in any table, any graph, any textual, so वी कैन इजीली मतलब होता है ना इजीली हम डेटा तो देख के समझ पाते कि हमारा डेटा क्या बोल रहा है ओके द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन डेटा डेटा को टाइप करना इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हाई व्हेन वी हैव मेक अ ग्राफ व्हेन मेक अ टेबल व्हेन मेक अ टेक्सचुअल फॉर्म so we can be easily मतलब डेटा को देखते we can understand कि it is our data it is the variable in this data set so we can easily understand we can easily analyze the data by see so data may be presented in three way in a statistics we can present the data in three way first is textual second is tabular third is graphical so we have a three way so presentation of data first is textual. Then what is the meaning of textual presentation? Textual presentation means that data are presented in a graph form. Means sorry in a paragraph form. Whatever data we have writing, so data we can written and we can read. It is the combination of text and figures. Means paragraph में when we have writing means we have writing something data. So we can read and we can return the data. In this paragraph, जो भी paragraph I am writing, उसमें मेरा text भी involve हो सकता है and figures is also involved. So textual presentation means जो भी आपके पास data है, whatever data you have. Wait, please, someone. Hello, Sunil Sharma. You are a new admission in this? It is your first class? Yes. Sorry, Sushil Sharma. Hello. Sushil Sharma, you are the new in the class. You are the left. Yes, Preetham, please on time. Next time, please class में on time. It is almost 11:42. मैम नेटवर्क प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होता है ना व्हेन आई स्टार्ट द क्लास तो मुझे पीपीटी से वापस यहाँ आना पड़ता है आपकी एक्सेप्ट मतलब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने सो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो प्लीज ट्राई कि आप नेक्स्ट टाइम ऑन टाइम आए ओके ओके मैम सो ओके सो here we have understand what is the textual presentation of data how can we present so textual presentation में क्या होता है जो भी हम डेटा लिखते हैं ना वो एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जाता है उस पैराग्राफ को वी कैन रीड वी कैन रिटर्न ओके एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन इस पैराग्राफ में टेक्स्ट भी हो सकता है फिगर्स भी हो सकता है व्हाट anything is there so textual presentation is the combination of text and figures the data are presented in a background form. We have taken one example. So the example is this of the 150 samples interviewed. The following companies were not 27 for lack of books in the library, 25 for a dirty playground, and 20 for a lack of laboratory equipment, and 17 for a not well maintained university building. So it is the paragraph form. We have a 150 sample data मैंने लिया है इंटरव्यू किया है then 27 people said that कि books is lack of books in the library means लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है इतना 25 से कि जो प्ले ग्राउंड है वो साफ नहीं है क्लीन नहीं है 26
जैसे कि जो लेबोरेटरी है, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स जो लेबोरेटरी होती है वहाँ पे इक्विपमेंट इज नॉट देयर, उपकरण नहीं है वहाँ पे। एंड 17 से कि और नॉट वेल मेंटेन यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, जो यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग है वो इट इज नॉट वेल मेंटेन नहीं है। तो इट इज जो डेटा मैंने लिखा है आई एम राइटिंग इन ए वन पैराग्राफ, आई एम राइटिंग इन द वन पैराग्राफ, सो इट इज द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। जो डेटा मेरे पास डेटा है 150 पीपल है उनका डेटा है कि ये डेटा है 27 ने ये बोला 20 ने ये बोला 25 है 27। तो जो मैंने डेटा लिखा मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा है, पैराग्राफ के फॉर्म में मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है। तो इट इज द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड। व्हाई? तो इसमें क्या होता है हमें ऑल दिस थिंग इज नॉट विजिबल, मतलब विजिबल मीन्स है ना, मीन्स कि हम देखते ही नहीं बता सकते कि किसने क्या लिखा है। सी 27 लाइक ऑफ वुड्स 25 से कि डर्टी प्लेट ग्राउंड, तो हमें रीड करना पड़ता है डेटा को, so it is not easy to understand the data. So textual presentation is not a very good form of data presentation. So here we use tabular presentation. Tabular presentation is very effective presentation of the data. So what is the tabular presentation? हम सब लोगों ने टेबल तो वही सबने बनाया ही है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम सबने टेबल बनाया ही। तो टेबल में क्या होता है, जो डेटा हम लिखते हैं वो इजीली विजुअल हो जाता है, इजीली वी कैन अंडरस्टैंड। जो डेटा होता है वो सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज रहता है। So first of all we understand what is a tabular presentation. So tabulation is the process of summarize, classify और ग्रुप डेटा, मीन्स वोटे डेटा हमारे पास है उसको क्लासिफाई किया जाता है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा मीन्स डेटा इन द इंटरवल व्हेन वी हैव दिस टाइप ऑफ डेटा ना 15 16 to 18 18 19 to 20 24 to, तो डेटा किस में क्लास इंटरवल में, तो इट इज नॉन एज अ ग्रुप डेटा in the form of a table so that it is easily understood and investigator is quickly able to locate the desired information. So means when we present the data, when we summarize the data in a table form, so what is the benefit of this? The benefit of this is that we can quickly able to understand the data, we quickly what the information is there in the data we can understand. So a systematic organization of data in a column and rows means टेबल में क्या होता है, टेबल में हमें पता है कि कॉलम्स होते हैं रो होते हैं। तो यस एनीवन, इफ ये क्या हुए हमारे, इट इज कॉलम या रो? एनीवन? इट इज कॉलम और इट इज रो। ओके, वो बहुत टाइम मेनी टाइम्स क्या होता है वी आर कंफ्यूज कि क्या रो है क्या कॉलम है। सो इट इज योर कॉलम एंड इट इज योर रो। तो जो भी हमारा डेटा होता है, टेबल किससे बनता है, टेबल इज मेड बाय द रो एंड कॉलम से हम टेबल बनाते। so when we have put the data in a row and column, तो we can, it is very systematic way में एक तो organize रहता है। तो when जब कोई चीज सिस्टमेटिक होती है तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि भाई क्या है क्या नहीं है, वी कैन इजीली सी बाय टेबल, तो हम देख के बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। सो इट इज अ टेबल। सो इन टेबल मेनी पार्ट्स आर देयर, मतलब टेबल बनाने से कुछ नहीं होता, टेबल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनका हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दिस। फर्स्ट इज टेबल हेडिंग। जब हम टेबल को हेडिंग देते हैं तो इट इज नॉन एज द टेबल हेडिंग। So what is the meaning of table heading? Table heading means the table number, उसमें क्या इंक्लूड आता है, टेबल नंबर एंड टाइटल। जब आपके पास बहुत सारी टेबल होती है, टेबल 1 2 3 आप बनाते हैं, तो टेबल नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टेबल नंबर देना चाहिए क्योंकि वी कैन इजीली कि बाय दिस टेबल 1 फ्रॉम टेबल 2 फ्रॉम टेबल 3, तो सो वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हम किस टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। सो टेबल नंबर इज very important when you make a table। जब आप टेबल बनाते हैं then it is very important that the title of the table should be given। always remember student, title of the table is always given। So here you see the title is not there,
In this example, I'm not writing any title. When I'm not writing the title, तो title कैसे होना चाहिए? Title is the just define your table. मीन्स आपकी टेबल के बारे में वो डिफाइन कर रहे हैं कि इस टेबल के अंदर ये वाला डेटा मिल सकता है. होता है टेबल नेम से वी कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा इस टाइप का डेटा इज देयर इन दिस टेबल. सो always table heading में क्या include होता है? Table heading is the consist of table number and title of the table. तो टेबल नंबर इज ऑलवेज गिवन. ओके स्टूडेंट, व्हेन यू मेक द टेबल, आप कभी भी कोई भी टेबल बनाए, इफ ओनली वन टेबल इज देयर इन योर पेपर या वन टेबल ही है आपके, मतलब जो भी आप समझ लीजिए कोई भी असाइनमेंट यू आर डन, कोई भी असाइनमेंट आप कर रहे हैं, तो व्हेन टेबल इज देयर, आप टेबल बना रहे तो ऑलवेज गिव द टेबल. इससे क्या होता है? टेबल नंबर देने से यू कैन इजीली गिव द रेफरेंस टू टेबल वन from table 1 we take this value. So it is easy कि हम कोई reference का use कर सकें. So and title should be given. Title of the table should be given. Title कैसा होना चाहिए? Title is just like कि आपके table को define कर दे भाई क्या कहना चाह रहा है आपका table. Okay. Then what is the steps? What is the steps? Means step is a classification of categories which are found at the left side of the body of the table. जो हमारी लेफ्ट साइड में जो बॉडी होती है ना, लेफ्ट साइड मीन्स सपोज आपके पास ऐसे टेबल है, तो दिस पार्ट इज योर लेफ्ट साइड. सो लेफ्ट, यहाँ पे बॉडी का मतलब क्या है? जो भी यहाँ पे डेटा कंटेन इज, इट इज द बॉडी ऑफ द टेबल. सो क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज विच आर फाउंड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द टेबल. जो भी मतलब जो भी आपके पास डेटा है उसको आपने कैसे क्लासीफाई किया, क्या कैटेगराइज किया, ऑल इज देयर इन स्टेप्स. Then what is the both side? Both side is the top of the column. मतलब कॉलम जो है आपका उसका क्या हेडिंग है? इट इज द both side. एंड बॉडी, बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द टेबल. ये जो टेबल आपने इधर कॉलम बना दिया, इधर आपने रो बना दिया, इधर both side, ये जो पार्ट होता है जिसमें डेटा आपने लिखा, इट इज द नॉन एज द बॉडी ऑफ द डेटा, बॉडी ऑफ द टेबल. Then what is the footnote? Footnote means any statement or note insert. Means if you have used any variable, suppose आपने यहाँ पे कोई notation define किया a, तो what is the meaning of a? यहाँ पर a का क्या meaning है? You just describe in the footnote. अब इस footnote में आप explain कर सकते हैं. आपका यहाँ table finish हुआ, then you define what is the meaning of a. You have used a, b, C. You have used three variable a, b, c. Then what is the meaning of variable a? What is the name of the variable b? What is the name of the variable c? So here you just write down all the information in footnote. Then last is source note. Source of the statistics, source of the data. So it is the very important कि source note means आपने डेटा कहाँ से लिया. अगर आपने जैसे यू हैव यूज प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, तो प्राइमरी डेटा आपने कैसे कलेक्ट किया उसका इन्फॉर्मेशन. इफ यू आर टेकिंग सेकेंडरी डेटा, अगर आपने सेकेंडरी डेटा लिया है देन आपने कहाँ से लिया? आपने किसी जर्नल से लिया है. यू आर टेकन द सेकेंडरी डेटा फ्रॉम द बुक्स, यू आर टेकन फ्रॉम द बुक्स. सो अगर वो सोर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब आपने इफ यू टेक द पॉपुलेशन डेटा, आपने इंडिया की स्टेट वाइड पॉपुलेशन डेटा यू हैव टेकन, आपने एक टेबल बनाया है उसमें यू जस्ट टेक द स्टेट वाइज डेटा. तो वो डेटा कहाँ से ले? स्टेट वाइज डेटा इज ऑलवेज देयर इन सेंसस. सो you just always mention ki what is the source of the statistics, what is the source of the data. Yes student, it is clear what is the meaning of table heading, what is the meaning of step, what is the meaning of both side, what is the body of the data, what is the footnotes and source note. Yes student, any doubt? स्टब्स का एकदम से बताइए. Yes, स्टब्स. step. So I know you are not understand what is the stuff. When we are take the example कि table हम बना रहे हैं, then it is very easy. Stuff means क्या होता है? Classification. Classification means suppose आपके पास population है, population है, population है, population को आपने divide कर दिया male and female में, male and female में you have divide. So क्लासिफिकेशन ऑफ कैटेगरीज आर फाउंड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द टेबल. ये लेफ्ट साइड में जो अगर हम किसी चीज को क्लासिफाई करके लिखते हैं देन इट इज नॉन एज द स्टेप्स. एंड
So we have taken an example, then you will understand what is the meaning of all these things. Okay. So here we have defined the table. So first of all, here I am writing table number. यहाँ पे you always write the table number. Then title of the table. Then what is the your box heading? मतलब ये जो box है उसका heading क्या है? Step यहाँ पे जो इसका steps है उसका heading क्या है? What is the caption heading? What is the caption subheading? It is the body of your data, and it is the total other numerical data. Then it is total. Footnote is defined here. Source note is defined here. So 1 minute. So in this example, 1 minute. So what is here? So what is your age? So it is your 1 minute. 1 minute. In this table, I am writing what is your age. So what is your age is means it is your box heading. It is known as the box heading. What is the meaning of this? It is your column heading. Then here if I am given any title, अगर यहाँ पे मैं इसको किसी और title में define कर दूँ, I am writing what is your age. So suppose I am divide the population in two parts. Part first is female and part second is male. Then it is your stubs. It is your column heading. It is your this is cover over all over your body of the data. So student, it is clear. It is your what is it is? It is your box heading. I am writing box heading. It is sorry. It is box heading. क्या box heading है? It is your body of the data. ये जो मैंने here I am defined. If I am given the one name of this variable, it is known as a step. If I am divide the population, suppose यहाँ पर population का age बताया है कि 16 to 18, 19 to 23, 24 to 23. Suppose I am dividing two parts, populations and female and male. So if I am writing here female and male, then it is the steps. So here always in last when your table is complete, always footnotes is there, and then you just define source. Source means जो भी आपने डेटा यहाँ पे पुट किया है, जो डेटा आपने लिया उसका सोर्स क्या है, वो डेटा आपको कहाँ से मिला है, ओके, इज ऑलवेज देयर. यस स्टूडेंट, इट इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मीन्स टेबल के सारे पार्ट्स क्लियर है आपको. व्हाट इज द सोर्स नोट, फुट नोट्स, बॉडी, बॉक्स हेड, स्टेप्स, टेबल हेडिंग. सो we have many types of table. हमारे पास बहुत सारी types के table होते हैं. We know that कि many types of table हमने बनाई भी है always. So first we have understand what is the simple of one way table. Then what is the meaning of simple of one way table? Simple of one way table means when is the simplest table which contain data of one characteristic only. Means जो data होगा वो किसी एक characteristic से होगा. तो the number of adult in a different occupation in a locality. So here we want to know हमारे पास adults है, हमारे पास here हम not define here it is a female and male. So we have only one variable adult. तो उसका मुझे occupation क्या है? Occupation is BA, BCom. Okay. Then number of adults कि कितनों ने MBA किया. Then how much is like this. So we have only one variable. Simple of one way table. Simple of one way table means it's the simplest table which contain data of one characteristic. हमारे पास एक ही characteristic है, तो it is adults. तो adults का data. So it is the one way table. Suppose we am taking two way table. Two way table means a table which contains the data on two characteristics is called a two-way table. So we have a number of adults. Number of adults. So we have divided in two parts. First is the male and second is the female. So we have a two characteristics. First is male, second is the female. But in last we have only one characteristic. It is the adults. So it is the one-way simple of one-way table.
Yes, student, it is clear what is the meaning of simple of one way table. When you have only one characteristic, आपके पास क्या होगा, एक ही characteristic होगा, then it is known as a simple of one way table. यहाँ पे आपके पास सिर्फ adults है. अगर adults को मैंने सिर्फ adults में तो male and female both are include, but here I am not classified. So it is the one way characteristics data. One way characteristic table we have, so it is known as the one way table, simple or one way table. When we have more than one means two characteristics, it is called the two way table, the male and female. The number, it is n is missing, the number of adults in a locality is in respect of occupation and sex. So number of adults, it is male and female. So it is the two-way table. Then third is the manifold table. Manifold table means which have more than two characters. मतलब अगर दो से ज्यादा आपके पास characteristics हुए, then you say that it is the, that it is known as the manifold. Means in this table, so in last table number of adults, first में क्या था, this variable is there, and second is adult is there, not classification is there. So in two-way table we have classified in two-way male and female, but here we have classified male. हमारे पास male है, male को भी मैंने classify कर दिया. How can married and unmarried people? So we have classified here. So we have more than two characteristics. Means हमारे पास number of adults में male and female है. Male and female में we have classified married and unmarried. Here the data of married and unmarried. Here the data of married and unmarried. So it is have a more than two characteristics. So it is known as the manifold table. Yes, student. Any doubt? No, ma'am. समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, student. All of you. शिवम समझ में आ रहा ना आपको टेबल क्या होता है क्या? यस प्रवेश, नवीन, दिव्या. Yes, ma'am. ओके, तो हमने समझा कि हाउ कैन वी प्रेजेंट द डेटा इन टेबुलर फॉर्म एंड टेक्सचुअल फॉर्म. सो it is complete. In next class we have understand how can we present the data in graphical presentation. How can we present the data through the graph? So I have already posted this PPT in your Google Classroom. You just see. So here we have understand textual and tabular presentation. In both to form, the tabular presentation is more effective. Why it is effective? So why we can easily understand. We can easily understand by table. हमारे पास table होता है तो क्या होता है? We can easily understand. अच्छा, it is there. Mean, oh, okay. This type of data, adults का data है. अच्छा, adults में male and female is divided. So in table में क्या होता है? Data is very attractive. Attractive होता है. So if data is attractive, so we can easily understand the data. कि क्या data है, क्या नहीं है, what is the given, what is not. So table presentation is more effective as compared to textual presentation. Okay, then we have understand graphical representation in the next class. Yes, student, you have any doubt? अब क्वेश्चन Ma'am, पूछिए आप लोग. please send this video in the Google Classroom. वीडियो आप लोगों के लिए ना वो YouTube पे जब यूएम को आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा YouTube वीडियो, तो वहां पे Ma'am, but it is too late, ma'am. That. अरे नहीं, जिस दिन हम पढ़ाते उस दिन हम लोग सेंड कर देते, वो लोग पोस्ट भी कर देते. ओके, आप लोगों को अगर ये गूगल क्लासरूम पे चाहिए तो आई हैव पोस्ट इन गूगल क्लासरूम आल्सो. सो ओके, ठीक है. गूगल क्लासरूम पे मैं अपने गूगल ड्राइव में सेव करके गूगल क्लासरूम पे उसका लिंक पोस्ट कर दूंगी. यू कैन सी, मतलब आप देख सकते हो उस वीडियो को. ओके ओके मैम. बाकी जितना भी अभी लेक्चर हुए ना, सारे वीडियो मैंने उस पर, मतलब मैंने मैडम को पोस्ट किया. मैडम ने वहां पे सारे वीडियो, मतलब जो यूट्यूब को हैंडल कर रही है ना इस चैनल को, तो वो उस पेज पे सारे वीडियो वो ही पोस्ट करती. तो व्हेन यू सर्च फ्रॉम BBA 103, तो लेक्चर वाइज
lectures I have post. जितना भी आपको क्लास हो ना, सारे lecture I have post. वहाँ पर Okay, है. ma'am. Thank you. Okay ना? Yes, student. Any doubt? No, ma'am. No, ma'am. आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Okay. Start your online test. It is almost 12:05. So start your online test on IMCRP. ठीक है, आप Okay, टेस्ट ma'am. दीजिए. ओके ना, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी प्रेजेंट द डेटा इन ग्राफ फॉर्म.